Okay, today onwards, we can start our third unit that is regarding oceanography. It consists of ocean's bottom के बारे में इसके अंदर है, उसके रिलीफ फीचर्स के बारे में है इसका जो डायनामिक्स है लाइक करंट्स वेव्स ये सब के बारे में है इस बार हमारे यूनिट 3 में. So let's start with the first topic, that is ocean bottom relief. Before going to the ocean bottom relief, let's understand what is this oceanography stands for. Actually, oceanography is a physical, chemical, and biology. Is the study of physiographical, chemical, and biological characteristics of ocean. Anything that we studied relating to the world's ocean or the seas or the associated features, that we can say it as oceanography, or like climatology, like geomorphology. This oceanography is the third important part of physical geography. The ocean, we know that is the largest water body on the Earth's surface, and that presence of this ocean makes the Earth a unique planet. Almost 3/4 of the Earth's surface that we know that is covered by this ocean or oceanic body, and also that's the largest storage of water. Even though it is saline in nature, we can convert that to fresh water also. So it is a large storage of water on the Earth's surface. Without the ocean, it regulates many things like the climate, like the biological aspect, like the environmental aspect. It controls many things. So the study of this particular water body is very much essential. If you look, we know that mainly there is 5 oceans, but we can count it at 6 also. So first and the biggest one is Pacific Ocean, then comes the Atlantic Ocean, then comes the Indian Ocean. So 3 main oceans are Pacific Ocean, Atlantic Ocean, and the Indian Ocean. And its northern portion, we can say it as Arctic Ocean, and in the southern portion, we can say it as Southern Ocean. So by dividing the northern side and southern side, we can divide the ocean into 5. Otherwise, there is mainly 3 oceans: Pacific Ocean, the largest ocean; second largest, the Atlantic Ocean; and the third largest ocean, that is Indian Ocean, which surrounds the Indian Peninsula. So what is the bottom relief of the ocean? जैसे है, as we know that the Earth crust is made up of two kind of masses. One is continental crust mass and other one is oceanic basin mass. तो ऐसा 2 division है हमारे लिए. But as the oceanic part is covered by water body, it is very difficult to understand the relief of the ocean bottom. जो ocean bottom के नीचे का जो बात है वो पहले से it's unknown almost. Sometimes we thought that it is flat, it is just a basin, but it is not like that. Whatever the features is available on the Earth crustal layer on this land surface, it is available on the oceanic bottom also. Like mountains, basins, plains, plateaus, ridges, canyons, gorges, valleys, जो भी features हो, that is also available on the bottom of the ocean. So that kind of relief is also known as the submarine relief or the ocean bottom relief. So here today, that is what we are going to discuss. But there is some difference in the oceanic relief and the continental relief. जैसे
continental reliefs are very much old features है. Proterozoic age तक almost 1 billion years ago से there is continental landforms, but the concept is entirely different in the ocean. It is the newest landforms that we can see, or newest relief. Newest relief not means that today or yesterday, as it's made of 60 to 70 million years ago. As we know that there is sea floor spreading. ऐसा है, टू प्लेट मार्जिन होगा तो यहाँ डाइवर्जन मूवमेंट होगा, तो इसमें क्या है, तो मैग्मा बाहर आ जाएगा एंड इट विल स्प्रेड टू द साइड्स ऑफ द ओशन. तो सी फ्लोर स्प्रेड हो रहा है इस जगह पे. सो व्हाट हैपेंस इज द बॉटम रिलीफ ऑफ द oceans are actually new in nature. That is why it's different. It is different. It is saying that it is different from the continental features because these are new landforms. So what are the major landforms of the ocean? Ocean में क्या क्या relief होगा? So there are mainly 4 major divisions, but along with we can add many. But if we add the continental rise also, we can say the ocean floors can be divided into 5 major divisions. But when you look, it is saying that the ocean floors can be divided into 4 major divisions. That includes the continental shelf region, continental slope region, continental rise region, then the deep sea plain and the oceanic deeps. Within the continental shelf, you can see number of small landforms you can see, or number of small relief you can see visible in the continental shelf. And coming to the continental slope also, you can see different landforms. To the continental rise, it's almost the small type of division है, तो इसमें तो ज़्यादा landforms नहीं है, still you can see some of them. Then the deep sea plain or the abyssal plain, almost all the features, the mountains, the gorges, the hills, the ridges, everything you can see in the deep sea plain region. Even though in general it looks like a plain region, but many physiographical features are visible in the deep sea plain area. Then comes the oceanic deeps. So deep sea plain and the oceanic deep. Deep sea plain ऐसा है, plain region on the bottom, but oceanic deep ऐसा है, that is the gorges. वो सबमर्जन कैनियंस है, ये सब आएगा ओशियनिक डीप्स में. जो वैली गॉर्ज बोलता है, नहीं तो वी शेप वैली बोलता है, जो भी हो, कैनियंस बोलता है. These are, we can say it as, or we can say it as trenches. That comes under the scope of the oceanic deeps. So these are the major oceanic bottom relief. The continental shelf, then the continental slope, then the continental rise, then the deep sea plain, and finally the oceanic deeps. Let's see each of this in detail. If we say the first one, the continental shelf region. So as we know, अभी ये this is the crustal or landform ऐसे जा रहा है, तो ऐसे इसका extension होगा, and एक जगह पे आने से it will suddenly fall. So what happens is, you can see water from here, you can see water here. But the thing is that the water is not limited to this particular slope. ये slope से यहाँ तक नहीं है पानी, पानी आएगा और आगे इतना सा आ गया. This is entire ocean region and water आ गया इतना तक. तो क्या होगा? There will be land extension. Land का ही अपना extension है to the sea. This portion we can say it as the continental shelf
region. The land का अपना extension है towards the sea. What happens is, where before coming to a vertical slope, there will be a slight slopy area which is being covered by oceanic water. That area, we can say it as the continental shelf region. You can see अभी coral reefs हो, atolls हो, estuaries हो, जो भी depositional features, main depositional features, you can see or is visible in this continental shelf region. So continental shelves continents do not abruptly end at the shoreline. They slope seaward from the coast to a point where the slopes become very steep. उतना तक इसका extension है वो slope का. That area we can say it as the continental shelf region. And the average slope of this region is 1 degree. तो बहुत कम है, slope बहुत कम होगा इसी region में. जिस region में हम लोग अभी fishing कर रहे हैं, ये सब region. Otherwise, if you look at a map of India, physical map देखने से you can see at the boundary line of between the continental area or the land area and the sea. In the seaside, you can see a white patch. White patch, even if you take a satellite imagery over the coastal areas, you can see white patches there. There will be extension, वो landward extension, land's extension towards the ocean. तो ऐसा एक white color patch देख सकता है. That usually represent the continental shelf region, and it provides too much of economy also. Economy के लिए भी that is very useful because fishing can be done there, minerals can be extracted from there. अभी जो monocytes है, ऐसा बहुत कुछ minerals मिल जाएगा उसी जगह से. Otherwise petroleum products मिल जाएगा उसी जगह से. So there are a lot of scope at this continental shelf region. The common feature you can see is the coral reefs. Coral reefs are common at this continental shelf region, and this is the largest depositional area by the rivers. जो rivers है, जो estuaries बनाएगा, जो deltas के बाद में वो जो mouth of the river आएगा at this place, continental shelf region. Some rivers even extends towards the bottom plain also. Plain region तक ये तो जाएगा, abyssal plain तक इसका extension होगा. It will sometimes cut the continental shelf, continental slope ये cut करके जाएगा. But most of the river will end at this place, continental shelf region. And what happens is they will deposit. They will deposit their sediments. So what is these sediments क्या है? These are usually the weathered materials that is being carried from the land area. Abhi when we study about the salt, salinity of the ocean, जो पढ़ते समय you can understand that the rivers वो carries lot of weathered materials. It consists of the salt materials also. जो भी weather rock का particles है वो लेके आ जाएगा and it will deposit at this particular continental shelf region. So इस पत्थर के अंदर क्या होगा? बहुत कुछ minerals भी होगा. So extraction, there will be deposition of minerals as well. There will be deposition of sands. There will be deposition of economic materials. तो ऐसा बहुत कुछ चीज इसमें से मिल जाएगा. That is the importance of continental shelf. And continental shelf of all oceans together form about 7.5% of the total area of the ocean. So even though this has less depth कम है और length कम है, but it's varies. The continental shelf का depth vary होगा. Length vary होगा. It depends upon the feature that is near to the coastal area. अभी एक हार्ड रॉक है, हार्ड रॉक की रीजन है, तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ तो कम होगा. बट इफ इट इज अ प्लेन रीजन, इसका एक्सटेंशन जा रहा है, तो देयर विल बी लॉन्ग एक्सटेंशन होगा कॉन्टिनेंटल शेल्फ के लिए. अनदर वन, अभी एक सी के अंदर एक आइलैंड है, तो इसका भी अपना कॉन्टिनेंटल शेल्फ रीजन होगा. जैसे हम लोग लक्षद्वीप में जाएगा
you can see a large extension of white patches around this particular particular island के जो surroundings में you can see there will be extension of land, but that is actually the continental shelf region of that particular island. The shelf typically ends at very deep slope. वो ऐसा है, continuous आएगा, फिर एक slight slope होगा, फिर उधर से एक direct ऐसा vertical slope हो जाएगा. This break, यहाँ से जो break हो रहा है, that is called the shelf break, continental shelf break बोलेगा इसे. And that boundary we can say it as andesite line. ये याद रखना है, andesite line is represent the shelf break और shelf boundary को andesite line बोलेगा. So that is about the continental shelf region. Second one comes the continental slope region. So यहाँ से जो continental ocean bottom relief के बारे में बोलेगा, तो असली में from this continental slope the relief of the ocean starts. But as the ocean or the water body is extending towards the land area, and this particular area is under the scope of this water, that is why we have included the continental shelf also in the scope of ocean bottom relief के अंदर लेके के आते. So the main and the first we can say important bottom relief is the continental slope region. तो यहाँ आ गया continental shelf. तो उसके बाद हम बोल दिया है there will be shelf break होगा, उसके बाद एक ऐसा vertical slope होगा. That kind of, if you look here, you can see there will be a slope here. That slope we can say it as the continental slope region. This is the continental slope region. अभी एक basin लिए सोचो, ऐसे एक basin है, तो ये basin का दो end होगा, दो बेस, इसके अंदर पानी होगा, इसके अंदर पानी होगा, तो इसका दो end होगा. So that is actually the continental slope region. It connects the continental shelf and the ocean basin or the abyssal plain. Ocean basin को नहीं है तो continental shelf को, इन दोनों के बीच में जो division है, that is actually the continental slope region. So see the difference. So it starts from depth, अभी 180 meter to 3600 meter तक है. So if you saw think, तो यहाँ slope है, यहाँ हो गया depth हो गया 180 meter at the top this portion में. But if you come here, this top will be 3600 meters. It varies in different books. Sometimes it say 200 meter to 3000 or 3500 or up to 4000 they can say. But on an average, the depth of this continental slopes region is between 180 meter to 3600 meter. उतना तक इसका difference है. That much of steepy slopes you can. And the gradient, it varies between 2 to 5 on an average. 2 to 5 degree है, but sometimes it will reach up to 15 degree. 15 degree तक इसका slope आएगा at some areas. अभी कॉन्टिनेंट हम बोल दिया है, सी आइलैंड्स के जो है अभी लक्षद्वीप ये सब जगह में जाने से कॉन्टिनेंटल शेल्फ का एक रीजन होगा, उधर से देयर इज एन अब्रप्ट फॉल ऑफ द लैंड. अब्रप्ट फॉल होगा डायरेक्ट ऐसा एक ये होगा आइलैंड होगा, आइलैंड के सामने ऐसा एक तो एक्सटेंशन कॉन्टिनेंटल शेल्फ का एक्सटेंशन होगा, इधर से देयर इज अ फॉल, तो यहाँ होगा ओशन बॉटम, यहाँ होगा ओशन बॉटम, उतना अब्रप्ट फॉल भी हो सकता है. So that kind of area we can say it as the continental shelf, sorry, continental slope region. यहाँ और एक चीज है, as the continental shelf has lot of deposition, this continental slope has no depositional features. यहाँ कभी भी depositional features नहीं होगा. As the slope ऐसा है, उतना सा slope है, so यहाँ deposition करने से भी this will automatically count down, नीचे आ जाएगा. So there is no deposition at this place, and you can see many canyons and trenches at this place.
If you look at this picture, you can see this is the continental slope region. ये है continental slope, and as the river, यहाँ से एक river आ रहा है, and it will start eroding. अंदर से भी इसका erosion continue होगा, तो ये erode करके नीचे abyssal plain तक आ जाएगा. तो यहाँ क्या होगा, इसका erosion बहुत ज्यादा है. As the steep increases, there will be अभी weak cut या ऐसा है, depth ज्यादा, कैनियन का बनाने का chances बहुत ज्यादा है. So you can see number of gorges or the canyons, or you can see number of trenches at this place, especially in the continental slope region. Canyons, the continental slope boundary indicates the end of the continents. तो यहाँ हो गया पूरा continents और ocean. असली में इसका extension पूरा हो गया, जैसे ये हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक हो गया कॉन्टिनेंट का, तो इधर से फाड़ हो गया, कॉन्टिनेंट का साइड आ गया ये, और द बॉटम ऑफ द ओशनिक फ्लोर, यहाँ से ओशनिक फ्लोर है इधर तक इसका. इट्स अ ट्रांजिशन जोन बिटवीन द कॉन्टिनेंट एंड द ओशियानिक पार्ट, दैट इज कॉल्ड द कॉन्टिनेंटल स्लोप. इसमें याद रखना है इसका डेप्थ होगा 180 मीटर. तो 180 मीटर बोलने से कॉन्टिनेंटल शेल्फ का स्लोप होगा मैक्सिमम अप टू 150 और 180 मीटर तक होगा कॉन्टिनेंटल शेल्फ का डेप्थ. बट ऑन द अदर साइड कॉन्टिनेंटल स्लोप का होगा, इट स्टार्ट फ्रॉम 180 मीटर टू 3600 मीटर तक होगा इसका स्लोप, एंड देयर विल नॉट बी एनी काइंड ऑफ डिपोजिशन एट दिस पर्टिकुलर एरिया. Then comes the continental rise region. अभी देखो continental rise ऐसा है. Actually, this is part of the continental slope itself. ऐसा continental slope आ गया. तो यहाँ से शुरू हो गया हमारा abyssal plain और the oceanic plain. Oceanic plain यहाँ से शुरू किया. तो यहाँ थोड़ा सा deposition है, बहुत कुछ deposition यहाँ होगा. फिर कहाँ होगा, यहाँ जो डिपोजिशन है यहाँ नहीं होगा, दैट विल डिपोजिट एट दिस बॉटम. ये जो बॉटम है इसका डिपोजिशन होगा. सो देयर विल बी सम राइस रीजन. तो ऐसा वर्टिकल स्लोप था, बट ये उड़ के ऐसा हो गया इसका शेप. सो दिस एरिया वेयर द डिपोजिशन हैपेंस, दिस एरिया वी कैन से इट एज द कॉन्टिनेंटल राइस रीजन. अभी देखो, दिस इज द कॉन्टिनेंट, ये तो कॉन्टिनेंटल स्लोप रीजन था, ये पूरा असली में ऐसा था, इतना तक इसका एक्शन, ये इतना, तो यहाँ से आने से इसका कैसे होना था, ये तो ऐसे आकर इधर तक आएगा, उसके बाद बॉटम था. बट व्हाट हैपेंड बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन, जो ऊपर का जो डिपोजिशन है, वो डिपोजिशन से ये पूरा फिल हो गया दिस एरिया, एंड द स्लोप हैज बीन रिड्यूस. वो स्लोप कम हो गया, पहले 2 डिग्री टू इवन इट रीच अप टू 15 डिग्री था, बट फॉर दिस कॉन्टिनेंटल राइज इसका स्लोप कम हो गया बिलो 1 डिग्री के, और अप टू 0.5 टू 1 डिग्री तक इसका स्लोप का एंगल बेंड गया है. सो दैट एरिया where the continental slope lost its steepness, and from there is a slight rise in the area. अभी इसका मतलब ये नहीं है कि ये तो यहाँ से ऐसा उड़ गया, ऐसा नहीं है, ये तो ऐसे जाएगा, लेकिन स्लोप कम होकर फिर धीरे जाएगा. स्लोप का ग्रेडियंट कम हो गया है. That area we can say it as the continental rise region. The continental slope gradually loses its steepness with depth because of this deposition. There are large areas of deposition. That area we can say it as the continental rise region. So, with the rise in depth, the rise because virtually flat and merges with the abyssal plain. So, ये क्या हो गया? Finally, यहाँ से जो slope का final end होगा abyssal plain और the oceanic basin. तो oceanic basin और the oceanic plain तक इसका extension होगा. So first one, continental shelf.
then the continental slope, then the continental rise. Then comes the bottom of the ocean, that is the deep sea plain or the deep oceanic plain region. So plain क्या है? It's a natural almost flat area होगा, not purely flat, but in visual it's look like a plain region. All the plains, as we know, as we are geographers, we know that all the plains are not true plain region or truly flat region. In looks, in appearance, it appears to be a flat or the plain region. That area we can see it as the plain region. So यहाँ क्या है? After the continental rise, तो surface ocean का bottom area आ गया. उधर क्या हो गया? The area has a flat, almost flat base हो गया. That area we can say it as the abyssal plain region. That area we can say it as the abyssal plain region. Look at the depth of this area. Its depth varies from 3000 meter to 6000 meter. तो continental shelf हो गया 150 और 180 मीटर तक. Then continental slope हो गया 180 to 3000 to 3500 मीटर तक. तो continental rise भी it comes part of the continental slope का अपना part है. So we don't want to divide it separately. But when we comes to the ocean or the abyssal plains, its depth varies from 3000 meter to 6000 meter. So 3 kilometer to 6 kilometer तक इसका depth है. So we know that Himalaya maximum इसका height है 8 किलोमीटर तक है इसका height. तो average depth होगा ocean का depth देखो almost 6 kilometer तक आ गया. So if the Mount Everest is in ocean, we can see only 2 kilometer height mountain ही देख सकते हैं. बाकी सब ये ocean के और पानी के नीचे ही होगा. Then the ocean basin, the deep in ocean basin, it covers almost 2/3 of the area. Deep sea plain होगा 2/3 of the total area of the ocean basin. अभी 100% लेने से it covers almost 60 to 65% of the total ocean area का ये cover करेगा. This abyssal plains, and they are extremely flat, featureless plain है of deep oceanic floor. Plain region, from the name itself, we understand that it is a flat area. The floor of the abyssal plain is covered by sediments. Sediments होगा, एक हो गया अभी जो लैंड एरिया से शेल्फ में आएगा, शेल्फ से ये बात फिर कॉन्टिनेंटल राइस में डिपॉजिट करेगा. इसका थोड़ा एक्सटेंशन इधर तक आ जाएगा, बट it's not the entire deposit coming from the continental area, but there is deposition from अभी volcanic, वो समुद्र के नीचे बहुत कुछ volcanoes होगा, तो volcanic ashes होगा और कुछ organisms होगा, वो मरेगा तो उसका भी deposition उधर होगा. So there will be humus, presence of humus also there, or the organic matter there. Then comes हम बोल दिया है there is sea floor spread और sea floor spread means वो मिड ओशियनिक रिज है ना, वो दोनों के बीच में, तो उधर से मैग्मा आएगा, उधर डिपोजिट करेगा, तो ऐसा भी डिपोजिशन उधर है. तो ऑल दिस सेडिमेंट्स मेक्स द अबैसल प्लेन. तो ये क्या है? कंटिन्यूअस डिपोजिशन एक के ऊपर दूसरा आ रहा है. सो दैट इज व्हाई दिस एरिया इज वी कंसीडर इट एज द यंगेस्ट लैंडफॉर्म ऑफ द पूरा अर्थ लेने से दिस एरिया हैज द यंगेस्ट लैंडफॉर्म्स, बिकॉज एक के ऊपर दूसरा डिपोजिशन कंटिन्यूअसली आ रहा है. एंड दैट कवर्स मेनली ऑफ द ऑर्गेनिक रिमेनिंग्स होगा, नहीं ये तो वॉल्केनिक रिमेन्स होगा, नहीं ये तो इट मे बी डिपोजिटेड बाय द रिवर्स. जो रिवर है ऊपर से वो लैंड से आ रहा है, इसका एक्सटेंशन अबैसल प्लेन तक होगा, तो इसका डिपोजिशन होगा. नहीं ये तो जो विंड, वो कोस्टल एरिया है, वो कोस्टल एरिया से जो विंड है
वो विंड इसको उड़ा के पानी में डाल देगा, वो धीरे सेटल होकर नीचे धीरे पानी में आएगा और धीरे नीचे आकर बॉटम एरिया में सेटल होगा। सो इसमें याद रखना है सेडिमेंट्स ऑफ रिमेनिंग ऑफ लिविंग थिंग्स, जो लिविंग थिंग्स है उसका जो सेडिमेंट्स है उसका डिपोजिशन से जो सेडिमेंट्स है दैट्स वी कैन सी इट एज ooze। क्या नाम याद रखना है, व्हाट इज ooze बोलेगा। तो सेडिमेंट्स दैट इज मेड ऑफ रिमेनिंग्स ऑफ द लिविंग थिंग्स, जो लिविंग थिंग्स होगा, लिविंग ऑर्गेनिजम्स होगा, प्लांट्स और एनिमल्स, उसका जो डिपोजिशन है दैट इज कॉल्ड द ooze or the oozes। Then the red clay, that is actually the volcanic remainings, mainly it consists of the volcanic volcanoes है, इसका eruption के टाइम में जो ashes है, नहीं है तो जो pyroclastic materials है इसका deposition है, that is usually we can say it as red clay। So these are the major sediments that is be visible in the deep sea plain or the abyssal plain। अभी हम बोल दिया है in abyssal plain you can see lot of other small features or physiographies like abyssal hills होगा, नहीं तो हाँ वैलीज होगा, नहीं तो gorges होगा, canyons होगा, trenches होगा, sea mounts होगा, geodes होगा, islands होगा। sea mounts itself is the island, वो sea mount होगा। अभी ऐसे एक सोचो, ऐसे एक माउंट है, if it comes to the surface, अभी बाहर ऐसा तक उतना ऊपर आ गया, so this portion there will be land, यहाँ तक इसमें land होगा, so this we can say it as an island। sea island और oceanic island बोलेगा, it's actually the part of sea mount होगा। sea mount जब बाहर आएगा इसे बोलेगा। and geodes means the flat shape, ऐसा flat shape mountains को we can say it as geodes। so all these comes in deep sea plain। so deep sea plain is not purely, or abyssal plain is not purely a flat area, it consists of certain other reliefs as well। then finally the oceanic deeps or the trenches। oceanic deeps includes the trenches or the deep ditches on the deep sea plain। जो same this is also comes under the deep sea plain area में है, नहीं तो as I said it can also be visible in the continental slope region में भी इसका है, but जो trenches आएगा mostly this is occurs in the deep sea plain region में इसका presence है। these are the deepest part of the ocean। here अभी great earthquakes or tsunamis or is occurring at these particular trenches or the deep seas। जो max अभी कैसा है, डाइवर्जन मूवमेंट होगा, ना ये तो कन्वर्जन मूवमेंट होगा, जो मूवमेंट के वजह से दिस काइंड ऑफ ट्रेंचेस ऑकर्स। उधर वेदरिंग के वजह से ऐसा कुछ नहीं है, मैकेनिकल ऐसा कुछ नहीं है। दिस ट्रेंचेस आर मेनली ऑकर्स एट द बाउंड्री रीजन। जो बाउंड्री रीजन होगा डाइवर्जन और कन्वर्जन मूवमेंट के रिजल्ट होगा दिस ट्रेंचेस। तो क्या होगा, इस रीजन, दिस रीजन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर many earthquake and not is the area for major earthquakes। तो earthquake हो गया तो क्या हो गया, सुनामी आ जाएगा। पर ये सुनामी क्या है, सुनामी ऐसा है दिस इज सी ऐसा वाटर बॉडी होगा एंड दिस इज द एरिया। अभी एक ट्रेंच है इधर, तो इधर से क्या होगा, यह earthquake हो गया तो इसका शेक होगा, शेक ऊपर ऐसे आ जाएगा and lot of water will enter, इसके अंदर पानी भी घुस जाएगा। तो there will be a wavy motion at this area। जो इसका बाहर जो सरफेस है उधर ऐसा होगा, तो बहुत पानी यहाँ से ऊपर आ जाएगा and finally it reaches the continental area। ये बड़ा waves अंदर घुस जाएगा। so that is called actually the tsunamis। tsunamis को ऐसे आता है and usually they are 3 to 5 kilometer deeper than the surrounding ocean floor। अभी ocean floor का depth हम बोल दिया है, it's almost 3 to 6 kilometer है। तो from that area
उधर से 3 किलोमीटर नीचे और 5 किलोमीटर नीचे। सोचो दिस इज 5 किलोमीटर नीचे, अभी ये दिस इज द कॉन्टिनेंटल एरिया, अभी ये तो 5 किलोमीटर नीचे है और ये 5 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर बॉटम में हो, उतना तक डेप्थ में होगा हमारा ओशियनिक ट्रेंचेस। तो इफ वी पुट our Mount Everest in that, we can't see the Mount Everest. That much of depth it will go. The trenches lies along the fringes of deep sea plain or the continental slope region. ये हम बोल दिया है. And the biggest or the deepest trench that so far we have find out is the Mariana Trench of Guam Island in Pacific Ocean. ये याद रखना है. And it is depth more than 11 किलोमीटर. तो कोई भी माउंटेन, हिमालयन का जो भी माउंटेन है, इसके अंदर जाने से नहीं देख पाएगा. And so far we have find out 57 trenches. And out of this, 32 are found in Pacific Ocean, 19 are found in Atlantic Ocean, and 6 are found in Indian Ocean. So these are the major ocean bottom reliefs. Continental shelf हो गया, continental slope हो गया, continental rise हो गया, oceanic abyssal plains हो गया, then oceanic deeps हो गया. ऐसा 5. इसके साथ along with this you can see number of small oceanic relief that we can say it as minor ocean reliefs. ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है. Some of the important oceanic relief, minor oceanic relief, that is seen here. One is the ridges. A mid-oceanic ridge is composed of 2 chains of mountains separated by a large depression. तो इस depression में you can see the trenches. तो ऐसा है, डाइवर्जन मूवमेंट हो रहा है, तो यहाँ से मैग्मा आएगा एंड इट विल डिपॉजिट ऑन 2 साइड्स. 2 साइड्स में माउंटेन्स होगा एंड बीच में क्या है, जो वेंट है, एक्सटेंसिव वेंट्स होगा, दैट इज एक्चुअली द डिप्रेशन. तो अभी इफ यू लुक, जो मिड अटलांटिक ओशन रिड्जेस, मिड पैसिफिक रिज, ये सब हो गया. अभी देखो, this is mid oceanic ridge, ocean के जो बीच exactly almost center में you can see the ridge system. Ridges are chains of mountains. ऐसा mountain का एक long extensive chains होगा, that is called actually ridges. तो ocean के exactly almost center में होगा, Atlantic Ocean में है, Pacific Ocean में है, इसका center में this ridge system होगा, where the divergent movements of the plains occurs. So it has the characteristic 2 side में mountain होगा, बीच में depression होगा. That is called the ridges. Then the sea mounts. A sea mount is an underwater mountain formed by volcanic activities. I have shown you here. This is sea mount actually. तो जैसे हमारे ऊपर ये mountain system बनाता है, जैसे हमारा नीचे भी same mountain system होगा. And most of these are volcanically formed mountains है. Actually वो जब volcano बाहर आएगा, उधर crater और वो vent से वो बाहर आ जाएगा and it will deposit on either side. तो ऐसा mountain बन जाएगा. That is called the sea mountains. Then the ghats. These are flat top mountains. सेम लाइक सी माउंट, सेम सी माउंट ही है, लेकिन इंस्टेड ऑफ ऐसा डॉम शेप के अलावा देयर विल बी फ्लैट, ऐसा शेप होगा, फ्लैट शेप होगा. सो यूजुअली आइलैंड्स, अभी इसके ऊपर आने से दिस लुक्स लाइक एन आइलैंड, so that's are called the ghats, flat topped mountains. Then the island arcs, same like the ridges. अभी टेक्टोनिक प्लेट मार्जिन में क्या होगा, देयर विल बी चेन ऑफ वोल्केनिक एक्टिविटीज. यहाँ जैसे हो रहा है ऐसे कुछ जगहों पे ऐसा होगा, वोल्केनिक एक्टिविटीज सी के ऊपर
वो volcanic activities होगा, and you can see number of islands. अभी this is the bottom region, and there will be number of ऐसा छोटा islands होगा. This forms the island arc. Islands arc are long chains of active volcanoes with intense seismic activity found along the convergent tectonic plate boundary. ये हो गया divergent, or in convergent area you can see the island arc. In divergent area you can see the ridges, mid-oceanic ridges. Then the atolls, coral reefs से जो बनाता है, that is atoll. Atolls are coral reefs surrounding a central depression. ऐसा एक डिप्रेशन होगा, एंड इसके सब साइड में कोरल रीफ का डिपोजिशंस होगा. दैट इज एक्चुअली द एटॉल्स. जैसे एक लेक है, लेक के सराउंडिंग में इसका बाउंड्री है, उस बाउंड्री में होगा कोरल रीफ का प्रेजेंट, एंड एट द सेंटर देयर विल बी सम डिप्रेशंस. एंड फाइनली द सबमर्ज्ड वोल्केनोस. Underwater vents or fissures in Earth's surface from which the magma can erupt. जो बाहर आता है, जो मैग्मा, वो क्या होगा? That will be comes under the ocean के जो नीचे, तो ये ऊपर तक नहीं आएगा, but within the bottom of the ocean or the water body ऐसा volcanoes आएगा, यहाँ ये erupt भी होगा. These are underwater vents or the fissure. तो बाहर आ जाएगा, ऐसा बन जाएगा. इट इज नॉट विजिबल, बट क्या होगा? अभी ऊपर से देखने से देयर विल बी रेड, ऐसा एक रेड कलर आपको देख सकता है. जैसे वो मैग्मा बाहर आता है और पानी के ऊपर से देखने से यू कैन सी इट इज क्लियरली विजिबल बाहर से, लेकिन इसका इन्फ्लुएंस तो बाहर नहीं आएगा, पानी के वो ऊपर नहीं आएगा, बट इट इज विजिबल. दैट इज कॉल्ड द submerged volcanoes. So these are the some of the minor oceanic relief features. ये हो गया first major हो गया. This is continent, then the continental shelf region, then the continental slope region, then canyons, वो जो बीच में होगा, और canyons और the trenches हो गया, then the rise हो गया, वो यहाँ एक slope ये हो गया, फिर abyssal plain हो गया this region में, फिर ये सब अबेसल प्लेन्स है. फिर इसके जो जो फीचर्स है, जैसे अबेसल हिल्स हो गया, आइलैंड आर्क. अभी देखो आइलैंड आर्क है, ये सब यहाँ से मैग्मा बाहर आ जाएगा, तो यहाँ बहुत कुछ डिपोजिशन के वजह से देयर विल बी लैंड. दीज आर आइलैंड आर्क. अभी हमारा ये देखो तो क्या है, लक्षद्वीप आइलैंड्स. अभी देखो बर्थ है, इट्स कंसिस्ट ऑफ 32 और 36 आइलैंड्स ग्रुप है. दिस आर ऐसा ही बनाया है, जैसे इफ यू लुक सी से देखने से दैट इज अ लैंड मास. ओके, दैट्स अबाउट द मेजर ओशन बॉटम रिलीफ फीचर्स. इस एरिया में कुछ डाउट है? नो सर. ओके, ये जो हाईलाइट किया है वो सब, ये स्पेशली द लास्ट वन, ये रिजेस होगा, स्पेशली गेआउट्स, ये सब वन वर्ड क्वेश्चन आ सकता है. मेनली दिस गेआउट्स, एटॉल्स, ये सब चीज, आइलैंड आर्क्स. Okay. Can we stop? Okay, sir. Thank you, sir.